हेलो बच्चों, आज हम ये वीडियो में 5th स्टैंडर्ड ईवीएस 1 का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे। एटमॉस्फेयर। द envelope of air around the earth is called atmosphere. As we go higher from the surface of the earth, the air in atmosphere becomes rarer. The air consists of a mixture of gases, namely nitrogen, oxygen, water vapor, and carbon dioxide. There are some other gases too in the air in very small quantities. The layers of the atmosphere are troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere and exosphere. एटमॉस्फेयर क्या है अभी तक हम लोग ने पता कर लिया है। लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. It consists of various type of gases, namely nitrogen, oxygen, water vapor, carbon dioxide and other gases. और एटमॉस्फेयर का जो लेयर है 5 पार्ट में डिवाइडेड है: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर and exosphere. Troposphere. The layer that extends from the Earth's surface to a height of about 13 km is called the troposphere. The surface of the Earth gets heated due to the heat it receives from the sun. Hence, the air nearest the surface is hottest. As we go higher in the troposphere, it becomes cooler. Almost all the water vapor in the atmosphere is contained in the troposphere. That is why all weather-related phenomena such as formation of clouds, rain, fog, winds, and storms take place in troposphere. The air on high mountains is rarer than the air near the Earth's surface. Aeroplanes fly in the higher part of the troposphere. पहला जो ट्रोपोस्फियर है अर्थ की सरफेस से 13 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। मतलब अर्थ की सरफेस से अप टू 13 किलोमीटर जो पार्ट है उसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। ऑल द वाटर वेपर प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फियर। और वेदर रिलेटेड फिनोमेना जैसे क्लाउड फॉर्मेशन, फॉग, विंड्स जो भी है ये सब ट्रोपोस्फियर में होता है। ड्यू टू द सन्स हीट और सरफेस हीट होता है, इसके लिए ट्रोपोस्फियर में एयर हीटेड रहता है। नेक्स्ट स्फीयर इज स्ट्रेटोस्फियर. Beyond the troposphere, up to a height about 50 km from the Earth, is a layer called the stratosphere. In the lower part of the stratosphere, there is a layer of a gas called ozone. Ultraviolet rays coming from the sun are harmful for living things, but the ozone layer absorbs them and protects the living world from those rays. स्ट्रेटोस्फियर जो है ये अर्थ की सरफेस टू 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। स्ट्रेटोस्फियर का लेयर पार्ट में एक लेयर है जिसे हम ओजोन लेयर बोलते हैं। ओजोन लेयर का काम क्या है? अर्थ के सरफेस में सन से जो भी सन की एनर्जी मिलता है, सन की हीट आता है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी रहता है जो अर्थ की लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है। ये जो अल्ट्रावायलेट रे ये ओजोन लेयर में पेनिट्रेट हो जाता है, मतलब ओजोन लेयर उसको रोक लेता है और ये ओजोन अल्ट्रावायलेट रे अर्थ की सरफेस में आता नहीं है। इसके लिए ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है अर्थ की लिविंग ऑर्गेनिज्म को। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऐसे ऐसे एयर थिनर होता है। अर्थ की हीट की वजह से नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एयर बिकम थिकर। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऐसे ऐसे थिनर होता है। इसके लिए हम जब भी माउंटेन एरिया में जाते हैं, गर्मी में हिल स्टेशन में जाते हैं, वहाँ हमें कूल फील करते हैं। इसके लिए गर्मी के टाइम पे हम लोग हिल स्टेशन में ज़्यादा करके जाते हैं। हाउ डज इट रेन? वाटर ऑन द अर्थ evaporates continuously due to the heat of the sun. Water that has percolated into the soil also evaporates due to the heat and enters the atmosphere. As water vapor is lighter than air, it rises off into the atmosphere. As it goes higher, it cools and condenses, forming very fine droplets of water. The droplets are so small and light that they float in the
atmosphere forming clouds. These small droplets join together and form bigger drops, which are heavy. Such drops of water fall down on the earth in the form of rain. This rainwater flows into streams, river, and finally into the sea. Ice in the snow-covered regions also melt due to the heat of the sun to finally flow into rivers. This process of evaporation, condensation, and rainfall go in a continuous cycle. This is known as the water cycle in nature. रेन कैसे फॉर्मेशन होता है? ड्यू टू द सन्स हीट water evaporate continuously and enters into the atmosphere. ये वाटर वेपर जो इवापोरेट करता है सन की हीट, वाटर फ्रॉम सरफेस वाटर एंड फ्रॉम ग्राउंड वाटर ऑल्सो, जो भी सॉइल पर्कुलेट करके सॉइल के अंडर बेनेथ में जो भी वाटर कलेक्ट है ड्यू टू सन हीट, that water also evaporated and goes into atmosphere and it goes off cools and condense. मतलब evaporate मतलब जो स्टीम जैसे हम देखा है गैस से और कंडेंस होकर वो वाटर ड्रॉपलेट में फॉर्म होता है. दैट वाटर ड्रॉपलेट इज वेरी स्मॉल एंड फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर and that droplet join with another droplet and form a bigger droplet, and that bigger droplet becomes heavy and that cannot flow in the atmosphere and that comes down in the form of rain, and that rainwater again fill in the rills, streams, rivers, and some water percolated by soil and collect store in underground. And due to sun's heat in snow region, ice also melted and flow into river. And this is the continuous process: condensation, evaporation, and rainfall. मतलब this process is going on continuously. Due to the sun heat, water evaporated and goes up into the atmosphere and from droplet and condense and come into or surface in the form of rain, and again that water evaporate due to sun heat and condense and come to the earth in the form of rain. This process is continuously going on, and this cycle of nature is called water cycle. See in this picture, soil water evaporated due to sun heat and from clouds, and that clouds join up from a bigger cloud and again come to the earth surface in the form of rain and fill into water bodies, all the water bodies of the earth, and again that evaporated due to sun heat, and this process is a continuous process. Biosphere. There are innumerable kinds of living things on the earth. The various regions of earth differ in many ways. Some regions are always covered with ice, while others have a hot climate. There are mountains in some places, plains in others. Some places have a lot of rainfall, while others are dry desert. There are salty seas and oceans and also freshwater lakes. The ocean is shallow near the coast, but away from the coastline, the ocean can be several kilometer deep. हमें इस लेसन में बायोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया. मतलब अर्थ का जो तीनों स्पीयर है, lithosphere, hydrosphere, and atmosphere, all the three sphere contains various type of living organism, and all this both the hydrosphere and lithosphere, this form various type of shape and the name different name, and as per their differentiation we find some here forest, some here cool region, and some here desert, some here mountainous place, and in this area we find various type of animals also, like kangaroo, elephant find in hot region, lion also, and the kangaroo we find only in Australia, and zebra it is found in only in Africa. Polar bear it is found only on snowbound polar region, आइस एरिया में ये मिलता है. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर
लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।